Okay, so today we are going to see again two more chapters from industrial pharmacy. So first we will see microencapsulation, the techniques of microencapsulation, then various methods of microencapsulation and their application. After that we will see a suppository. Okay, in the last session we have seen the capsules dosage form. What do you mean by capsules? What are the different types of capsules, their sizes and etc. Quality control test, manufacturing equipments, etc. etc. So in today's session we are going to see this microencapsulation, and we'll see first microencapsulation and then we'll see the suppositories. So first of all, what do you mean by microencapsulation? तो microencapsulation किसको बोलेंगे? In the we have seen in the capsule chapter. So capsulation means what? Capsulation or formation of capsule means what? Just enclosing your drug inside the empty gelatin shell or empty cellulose shell. That is nothing but the capsule. But now what do you mean by microencapsulation? So micro means what? Micro means a particle size or a core size in a micron. So microencapsulation is nothing but the again a method of capsulation. Again a method of capsulation, but only the difference is nothing but the particles are coated, particles are enveloped, particles are wrapped in the a thin layer of your polymer. Okay, so that is known as a microcapsule. Encapsulation of particle size in a micron, known as a microencapsulation. There are different techniques for this microencapsulation. माइक्रो एनकैप्सुलेशन के बहुत सारे टेक्निक होते हैं. जैसे मान लीजिए कि आपको कोई ड्रग है आपका जिसका दो ड्रग है उसका compatible नहीं. If there are two drugs and they are not compatible, but if you want to formulate one tablet only and you don't want to formulate the bi-layer tablet, you want to formulate only single layer tablet of two uncompatible drugs or two incompatible drugs, then what is the options you have? So you can carry out the micro encapsulation of one drug. Okay, so that the interaction between two drugs will be prevented. If your drug is in a liquid form and it is not stable, for example vitamins, so vitamin D, vitamin A, so lipid soluble vitamins, so what happens to them? Peroxidation, okay, hydrolysis, decomposition that occurs in this because they are in a liquid form. Okay, that's why now you you cannot formulate a tablet with a liquid. आपने कभी देखा है क्या कि विटामिन ई का टैबलेट, विटामिन ए का टैबलेट लिक्विड में? नहीं. You cannot formulate a liquid into a tablet. But if you do microencapsulation, if you form a coat over that droplets of your drug, now that can be formulated in the tablet. So microencapsulation is a tool, it is a technique through which you can prevent the drug-drug interaction. You can prevent again you can prevent again the stability. Okay, so you can prevent the drug degradation. So stability is also one of the important issue. Then drug-drug interaction is one of the important issue. Okay, and you can formulate control release tablet, sustained release tablet. Okay, again by using microencapsulation. So these are the few application of your microencapsulation. So basically microencapsulation deals with the encapsulation of a micron size particle or a drug or a solid or a liquid or a droplet or a emulsion or a colloidal suspension. Okay, so आपका जो ड्रग है वो अगर सॉलिड भी हो सकता है या फिर लिक्विड भी हो सकता है या फिर ड्रॉपलेट हो सकता है, ड्रॉपलेट इन केस ऑफ इमल्शन. ओके, या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन हो सकता है. सो ऑन दैट drug you have to make a very thin coating like your capsule. So that is nothing but the microencapsulation. So microencapsulation again is a tool to improve the stability of drug, to prevent the incompatibility between drugs, to enhance the to alter the pharmacokinetics of your drugs. For example, to formulate a sustained release, to formulate a control release, to prevent the decomposition, etc. etc. So it is again one of the tool. So that is a microencapsulation. Microencapsulation means capsulation of particles in a micron size by different means or by different methods. So here is one method which is explained. So I will explain you in a very short. So actually it is a method of coagulation phase separation. So your solid material or liquid material, जो भी आपका ड्रग है solid or liquid, so that is known as encapsulant or material to be encapsulated. Okay, or material to be coated. Okay, so that is an encapsulant. Okay, and again encapsulant or capsulation encapsulant, then material to be coated, this is the material to be coated.
Now this is a coating solution. Coating solution is nothing but the solution of polymer in a particular solvent. For example, there are different kind of polymers like methyl carboxymethyl cellulose, etc., etc., Zain, etc., etc., shellac. Polymer you want to coat on a particles. Now these particles may be either solid or liquid or droplets. तो कैप्सूलेंट क्या होगा आपका? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, आपका ड्रॉपलेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओके, देन ये जो पॉलीमर है आपका सॉल्यूशन, दैट इज दैट इज नथिंग बट द पॉलीमर डिजोल्व इन द सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है इथाइल एसिटेट, सो पॉलीमर डिजोल्व इन द सॉल्यूशन सॉल्वेंट. So you have to coat this polymer layer. You have to make a polymer layer on your material. So you have to mix that two in a mixing vessel. After mixing, so your polymer is in a liquid form, your polymer is in a solution form. Now you have to make that polymer from liquid state to solid state. So you have to change the state of that polymer. There are different means you can change the state of your polymer. कि आपका पॉलीमर जो है सॉल्वेंट में इनिशियली वो आपका लिक्विड है, लिक्विड में सॉल्यूशन है उसका सॉल्वेंट में, तो उसका आपको चेंज करना है, फेज चेंज करना है. तो कैसे करेंगे? यू कैन यूज हीट by using control temperature or by using addition of salt. Okay, by using addition of non solvent, etc., etc. There are different methods to precipitate that. Okay, there are different methods to precipitate your polymer in the solution, and that polymer in the solution will form a coat, that will form a layer on your particles. There are different methods to precipitate the uh, your polymer in the solution. Like temperature is there, evaporation is there. Okay, or decreasing the temperature, addition of another solvent, addition of incompatible polymer or polymerization reaction. That is nothing but the phase separation coagulation method actually. So as I have told you, what do you mean by microencapsulation? So capsulation of particles in the micron size, so which may be either solid, liquid or droplets. So they are known as a encapsulant. आपको माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्यों करना है? क्योंकि अगर आपको दो ड्रग एक ही टैबलेट में बनाना है, लेकिन आपको बायलेयर टैबलेट नहीं बनाना. इफ यू वांट टू फॉर्मुलेट अ सिंगल लेयर टैबलेट and if two drugs are incompatible, then you can encapsulate one drug by using inert polymer, so that another drug will not react with the that drug, and the incompatibility will be prevented. Again, if your drug is decomposing, so you can encapsulate them, and you can prevent the decomposition. You can increase the stability of your drug by encapsulating it. Then again, there are different reasons for encapsulation. If you want to formulate sustained release tablet, then control release tablet, etc., etc. So encapsulation. Okay, so encapsulation means what? So relatively formation of a smaller thin layer, a small, very small layer on a particles of micron size, that is known as a encapsulation. That means enclosing your particles in the film, or in the film of polymer. Okay, so enclosing your particle in the film of polymer. Okay, so formation of relatively thin film on a particles of a polymer, inert polymer, that is nothing but the microencapsulation. Okay, so suppose that these are nothing but your drug particles or drug crystals or anything, droplets of drug or solution of drug. Okay, then it is nothing but the coating polymer solution. So polymer dissolve in the solution. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे acacia, tragacanth, microcrystalline cellulose, etc. So these are the polymers, they are dissolved in the solution. You have to mix these two. Okay, after that you have to precipitate that you have to precipitate, or you have to change the phase of your polymer. So जो आपका polymer liquid state में है यहाँ पे, उसका phase change करना है आपको, so that it can be solidified and it will form a mono layer on your particles. Okay, so solution में जो polymer है वो selectively कहाँ पे जाता है? इंटरफेस पे जाता है. इंटरफेस मतलब सॉलिड लिक्विड के इंटरफेस, उसमें जाता है और वहाँ पे एडियर हो जाता है, या फिर वहाँ पे एक लेयर बनता है. तो वो लेयर थोड़ा सा, दो चार लेयर अगर बन गया उसका, so that is nothing but the encapsulation, a formation of a thin film of your polymer on the particles, that is nothing but the microencapsulation. Then you have to select, you have to
separate that microcapsulated particles. Okay, so it is general method. Okay, we are going to discuss this method in the upcoming slide in the details. So just remember micro encapsulation क्या होता है. Micro encapsulation is nothing but it is a technique, it is a tool through which or by which a solid particle in a range of micron size, they are capsulated or they are enclosed in a thin film of your polymer. Okay, thin film of your polymer, that is nothing but the micro encapsulation. Now what is the reason? I have already told you. So to prevent the incompatibility, to prevent the degradation of your product. Suppose vitamin A, so vitamin A occurs in the liquid form. Okay, so easily get decomposed. So in the liquid form it easily get decomposed. So if you convert that liquid droplet into a solid, so that will increase the stability of your vitamin A. So that will increase the stability of your vitamin A. So just by enclosing the vitamin A droplet into a inert polymer thin film, that is nothing but the microencapsulation. There are different reasons to increase the stability, to increase the compatibility, of incompatible polymer, to formulate or to make a sustained release formulation, to make a controlled release formulation. These are the applications of your this microencapsulation. So if you want to read application and all that, you can read from Blackman. Actually, that is not important. So there was just an introduction. Now, what is microencapsulation? It is nothing but it is a mean of application. It is a tool or it is a means of application of relatively thin coating on a particle or particle of solid or droplet or liquid and dispersion. So it is a application or it is a formation of a relatively thin coating on a particle, solid or droplet or liquid or dispersion. So now particle being coated, they are known as a core material. जो particle को coat करना है उसको क्या बोलेंगे? Core material. So that particle being coated is known as a core material, and the polymer by which coating is done is known as a coating polymer. Okay, or coating solution. Now the core size may range in the different size. The core, whatever the particles which are being coated, they may have different size. They may have from tenth of micron to 5000 माइक्रोन. कुछ 1 माइक्रोन से लेके 1 माइक्रोन से लेके कुछ 5000 माइक्रोन तक साइज हो सकता है उसका. So whatever particles they are coated, they are on a micron size. That's why the technique is known as a micro encapsulation. So encapsulation of particle size in a micron, known as a micro encapsulation. Now micro encapsulation provides the way of converting liquid to the solid. As I have told you, अगर आपका विटामिन ए जो होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन डी होता है, पहले तो क्या होता था कि विटामिन ए का जो है, विटामिन ई का जो है, वो सिर्फ कैप्सूल आता था, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल. लेकिन आजकल अभी मार्केट में उसका टैबलेट भी मिलता है, विटामिन ए का टैबलेट. Because vitamin A is a liquid. Okay? That liquid droplets are being encapsulated in the through by method of encapsulation, and it is converted into solid. It is converted into solid. Now that solid can be made into tablet. Okay, so microencapsulation provides the way of converting liquid into solid by altering the, okay, altering the collider and surface properties of your liquid. It provides the protection from external environment and controlling the release characteristic of drug, that is a bioavailability of core material. So suppose that if you encapsulate a paracetamol tablet or if you encapsulate a paracetamol drug by encapsulating material, so paracetamol will cause less irritation to the stomach. So for example aspirin क्या होता है कि aspirin is a weak acidic drug. वो स्टमक में जाने के बाद में क्या होता है कि वो अनआयनाइज्ड होता है, वो स्टमक को बाइंड करता है, वहाँ पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उनको भी इनिबिट करता है सिंथेसिस का. So what happens? So aspirin cause irritation in the stomach. So if you coat that aspirin particles or aspirin powder with the microencapsulation, so what will happen? You can formulate that aspirin to release slowly. So that polymer will release aspirin slowly and it will less irritate your stomach. So microencapsulation provides the way of converting liquid into solid by altering the colloidal and surface properties of your core material. Surface properties है, colloidal properties होता है आपका particles का, उसको modify कर देता है because if particle is being coated by a thin film of your polymer, so the surface properties of that particle will be changed totally and it will provide a protection from external environment. For example, vitamins, they are degraded in the vitamins, they are degraded or they are not stable normally. Okay,
but you can increase or you can enhance, you can improve their stability by means of encapsulation. And also this encapsulation depending upon the material, depending upon the polymer used. Okay, so this micro encapsulation may be also useful for changing the or controlling the release characteristic, means to control the dissolution. so अगर आपको मान लीजिए कि 1 आवर में सिर्फ मान लीजिए कि 100 ml ड्रग है आपका, और आपको 100 नॉर्मल कन्वेंशनल टैबलेट में क्या होता है कि वो टैबलेट खाएंगे आप, टैबलेट जाएगा स्टमक में, ब्रेक हो जाएगा और वो ड्रग रिलीज कर देगा। नाउ अगर आपको 100 mg रिलीज नहीं करना है, आपको क्या करना है कि हर एक आवर्स में 20 mg रिलीज करना है, हर एक आवर में, हर मतलब इनिशियली आपको 20 mg रिलीज करना है और उसके बाद में 45 मिनट्स के बाद में पूरा बाकी 80 mg रिलीज करना है। So if you formulate microencapsule, if you coat that powder of aspirin or and so you have to coat using two different polymer. 20 mg you have to coat by different polymer and you have to coat 80 mg by different polymer, so that 20 mg will be released immediately and 80 mg will be released after 45 minutes. So you can control the release of drug, okay, by using microencapsulation. There are different methods for microencapsulation. So around 8 to 10 methods are there, but only 3 4 are important because in the pharmaceuticals only these methods are nowadays used. Other methods have not been established very well in the industry, so that's why we'll discuss only few methods. So air suspension method is there, then coaguation phase separation method is there. Air suspension method, phase separation, coaguation method, we remember the names of method. Micro encapsulation methods, air suspension, then coaguation phase separation, then spray drying, then spray congealing, then polymerization technique. So these are the four. Okay, so again we have one more, polymerization, solvent evaporation. These are the methods which are known as the microencapsulation methods. Those are most frequently used in the pharmaceutical industry nowadays. Now applications of microencapsulation, इसका application क्या होगा? As I have told you already, sustained release or to make a prolonged release drug, taste masking in case of chewable tablets, taste masking, ठीक है, taste masking of tablets, then powders, suspension, single tablet within a two in, again. So if you want to do, if you want to make a tablet which consists of two drugs which are incompatible, single tablet with a two incompatible material, you can formulate by using microencapsulation. So it is a new, again a new formulation technique for creams, ointments, surgical dressing, plasters, suppositories and injectables. These are the application in very short. Now important application, other important application are like stabilization of core material, control of release of core material, and to control the bioavailability, and separation of chemically in reactive material. If two ingredients are there which are incompatible chemically, you can separate that. Okay, so these are the applications. Okay, so stabilization I have told you in case of vitamin A, vitamin E, so it is present in the liquid form, so it is not stable. Okay, वो जल्दी डिग्रेड हो जाता है, वो जल्दी उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है. टू improve the stability, microencapsulation is one of the mean for improvement of stability. Example, microencapsulation of vitamin A, vitamin E, oil will convert them into free flowing powder. So microencapsulation of these two, आजकल जो माइक्रो एनकैप्सुलेशन होता है इसका, विटामिन ई का, विटामिन ए का, या फिर कोड लिवर ऑयल, शॉर्ट लिवर ऑयल. So micro encapsulation convert this liquid into free flowing powder. Now you can make a tablet of that powder. Okay, so you cannot make a tablet of vitamin E and A as such because they occurs in the liquid form. तो उनका पहले माइक्रो एनकैप्सुलेशन करते हैं. So liquid droplets are covered by thin film of polymer, so that liquid will be converted into free flowing powder. Now you can easily formulate a tablet because in case of liquid degradation is there, in case of liquid the formulation problems are there, in case of liquid there are a lot of formulation issues, but in case of solid there are very few issues. Okay, so conversion of vitamin A and E, liquid vitamin A and E into free flowing powder will improve their stability, will improve their storage condition, will improve their shelf life, right? So that is a microencapsulation application. Now what are the different methods? Okay, now as I have told you, so microencapsulation involves 2 3 terms. For example, first one is a core. What is meant by core?
कोर इज नथिंग बट द मटेरियल टू बी एनकैप्सुलेटेड। आपका जो पार्टिकल्स है, जो ड्रग है, जो आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, आपका ड्रॉपलेट हो सकता है, कोलाइडल सॉल्यूशन हो सकता है, सो दैट मटेरियल इज नोन एज अ कोर। एंड अगेन कोटिंग सॉल्यूशन, और कोटिंग सॉल्यूशन मीन्स पॉलीमर सॉल्यूशन और पॉलीमर डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, दैट इज अ कोटिंग सॉल्यूशन। तो ये हो गया कोर, एक हो गया कोटिंग सॉल्यूशन, और दोनों को मिक्स करके आपको माइक्रो एनकैप्सुलेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सम माइक्रो कैप्सूल कोर मटेरियल। ठीक है, कुछ कोर ड्रग जो है उनका माइक्रो एनकैप्सुलेशन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? तो कोर मटेरियल एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल एस्टामिनोफेन or paracetamol. So your paracetamol has a lower water solubility and also has a very bitter taste. So microencapsulation of this paracetamol or acetaminophen, okay, so that is done to mask the taste. So taste masking is the purpose of microencapsulation for paracetamol, and it is formulated in the form of tablet. Then again activated charcoal is again microencapsulated. तो आप बोलेंगे एक्टिवेटेड चार्कोल को माइक्रो एनकैप्सुलेशन का क्या जरूरत है सर? सो एक्टिवेटेड चार्कोल का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज? इट इज यूज्ड फॉर द एडसॉर्प्शन ऑफ पॉइजन फ्रॉम द स्टमक। तो एक्टिवेटेड चारकोल कब देंगे आपको? जब आपका पॉइजनिंग हो गया और वो दूसरा कोई मीन नहीं है, मतलब टू रिमूव दैट पॉइजन, दे इंट्रोड्यूस एक्टिवेटेड चारकोल एंड दे प्रिवेंट द absorption of that poison, but it can absorb each and everything whatever present in your stomach. So if you use normal charcoal, it can absorb everything, okay, whatever is contained in the stomach. But if you, okay, if you change the selectivity of that, if you change the selectivity, so it will be more selective for the chemicals and drugs. So by making microencapsulation activated charcoal, its selectivity will be changed and it will be useful for, it will be more useful. So it is available in the dry powder. Again microencapsulation of aspirin. तो aspirin जो है आपका एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, it has a low water solubility and again bitter taste. So encapsulation is done to mask the taste, to get a sustained release action and to prevent the incompatibility of aspirin with other drugs. It is available either in a tablet or capsule form. माइक्रो एनकैप्सुलेशन करने के बाद आप टैबलेट भी बना सकते हो उसका, या फिर कैप्सूल भी बना सकते हो. Then again islets of Langerhans. So whatever viable cell, जिंदा सेल, so जिंदा सेल जो है that is known as a viable cell. So viable cell of your islets of Langerhans. So pancreas का islets of Langerhans है, उसके सेल जो थे viable cell, they are microencapsulated. For what? To get a sustained and normalization of diabetes, to get a sustained action and normalization of diabetes. जो लैंगरांस होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आपको देंगे इंसुलिन, तो इट इज आल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन. नाउ अगेन अनदर कोर मटेरियल आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट. so it is a drug known as a nitrates, it is a drug known as a organic nitrates. So isosorbide dinitrate is useful in the angina pectoris as a vascularite. So it is a water soluble solid, is a water soluble solid, okay, so that's why its action is a transient. वाटर सोल्यूबल होने की वजह से क्या है, इसका एक्शन क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए रहता है. सो यू नीड अ सस्टेन्ड एक्शन, यू नीड अ प्रोलॉन्ग्ड एक्शन. सो माइक्रो एनकैप्सुलेशन, इट इज कोटेड विद द polymers which can release the drug slowly. So sustained action, purpose of micro encapsulation sustained action. So it is formulated in the form of capsule. Next your next core material is a progesterone. It is a highly soluble in a water, so that's why it has a very transient action or very short action. So to get a sustained action or sustained release action, so it is encapsulated by polymer. So it is available in the varied dosage form, मतलब कैप्सूल में भी आता है, टैबलेट में आता है, इंजेक्शन. Now next is in the vitamin A. So vitamin A is available in the liquid form. So vitamin A palmitate, okay, it is available in the liquid form. So it is a less stable, the stability problem is there. So to enhance the stabilization to the oxidation, तो ये जल्दी ऑक्सीडेशन होता है इसका, ऐसा एज इट इज अगर लिक्विड यूज किया तो. अगर उसको माइक्रो एनकैप्सुलेशन किया तो उसका ऑक्सीडेशन बहुत ही स्लोली होता है, मतलब स्टेबलाइजेशन इंक्रीज करता है वो, और शेल्फ लाइफ इंक्रीज करता है. सो इट इज अवेलेबल एज अ ड्राई पाउडर. सो दीज आर द नथिंग बट द सम कोर मटेरियल विच इज एनकैप्सुलेटेड. कुछ कोर मटेरियल है, एनकैप्सुलेट करना है उसको. क्यों करना है, उसका रीजन भी दिया है. because of their stability, because of their certain drawbacks, okay, you have to formulate microencapsulation. Now next one is nothing but what are the different techniques for microencapsulation. तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा नहीं,
आया तो एक आधा क्वेश्चन आ सकता है कि द पर्पस ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन, वो ऊपर के चार्ट पे या किसका माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्यों करना है, इसके ऊपर आ सकता है एक आधा क्वेश्चन, नहीं भी आ सकता। बट ये जो चार्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आता है। तो देर आर डिफरेंट मेथड फॉर माइक्रो एनकैप्सुलेशन। फर्स्ट मेथड इज एयर सस्पेंशन मेथड, second method is a coazerbation phase separation method, third method is a microorifice centrifugal method, fourth one is a coating method or it is also known as a pan coating, then next method is a solvent evaporation, and last one is a spray drying and spray congealing. So these are the different method for micro encapsulation. अभी ये मेथड में कोर मटेरियल कौन सा यूज करना है, और जब आप माइक्रो एनकैप्सुलेशन होता है तो उसका माइक्रो एनकैप्सुलेशन किस पार्टिकल साइज रेंज में करना है. So micro encapsulation methods, the core material used and particle size in a micron approximately. Particle size of core material in the micron. कौन से माइक्रोन साइज के पार्टिकल आप माइक्रो एनकैप्सुलेशन करेंगे इस मेथड में. फर्स्ट वन इज एयर सस्पेंशन मेथड. ओके, so mostly it is used for the encapsulation of solids. So it is a method used for micro encapsulation of solid. So you can encapsulate a particle size in a range of 35 to 5000 माइक्रोन और समटाइम्स मोर देन 5000 माइक्रोन. तो इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, माइक्रो एनकैप्सुलेशन मेथड भी बोलते हैं और इसको मैक्रो एनकैप्सुलेशन मेथड भी बोलते हैं. सो दिस एयर सस्पेंशन मेथड इज आल्सो नोन एज इट इज नोन एज अ माइक्रो एनकैप्सुलेशन मेथड एज वेल एज मैक्रो एनकैप्सुलेशन मेथड. मैक्रो मतलब ज्यादा, माइक्रो मतलब कम. ठीक है, याद रखो. सो पार्टिकल साइज इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. So by air suspension method, the range of particle size by the range of particle size that is 35 to 5000 micron. Okay, that can be micro encapsulated by air suspension method. तो इसके क्वेश्चन आ चुका है इसके रिगार्डिंग. So air suspension method, what is the particle size range by which by what is the particle size range to be encapsulated by air suspension method. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आ चुके हैं. By air suspension method, you can encapsulate a particle size in a range of 35 to 5000 micron or more than 5000 micron, and that's why it is known as a micro as well as macro encapsulation technique. Macro as well as micro encapsulation technique. Now, second method is a coazerbation phase separation method. Now, in this method, you can use solid as well as liquid. तो इस मेथड में सॉलिड को भी माइक्रो एनकैप्सुलेट कर सकते हो, लिक्विड को भी माइक्रो एनकैप्सुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग कोएजर्वेशन फेज सेपरेशन मेथड. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. सो दे कैन आस्क क्वेश्चन लाइक दिस, ए सॉलिड और ए लिक्विड ड्रॉपलेट कैन बी माइक्रो एनकैप्सुलेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक. तो ऑप्शन में देखिए एयर सस्पेंशन, कोएजर्वेशन फेज सेपरेशन, पैन कोटिंग एक्सेट्रा. सो यू कैन ओके रिमेंबर यहाँ पे एयर सस्पेंशन जो है सॉलिड के लिए आता है, जो पैन कोटिंग जो है उसके लिए भी सॉलिड आता है. सॉलिड माइक्रो ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक, सॉल्वेंट इवेपोरेशन एंड स्प्रे ड्राइंग, स्प्रे कंजरी, ये तीनों में लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों आता है. तो अभी सेकंड क्या है, फेज सेपरेशन कोएजर्वेशन मेथड. कोएजर्वेशन फेज सेपरेशन मेथड. सो यू कैन कोट solid as well as liquid droplet. And what is the size range? That is 2 to 500 micron. 2 to 500 micron. The next method is a multi-orifice centrifugal method or centrifugal multi-orifice method. Now, by using this method, multi-orifice centrifugal method, so you can coat either solid or liquid, or you can encapsulate solid or liquid in a particle size range of 1 to 5000 micron. Then next method is a pan coating. जो आपका टैबलेट कोटिंग का जो कोटिंग पेन होता है बस उसी टाइप का कोटिंग पेन होता है यहाँ पे. सो पैन कोटिंग मेथड, यू कैन encapsulate the solid using pan coating and it is in a size range of 600 to 5000 micron or more than that. ठीक है, it is a range. Solvent evaporation, next method is solvent evaporation. So you can encapsulate solid as well as liquid in a particle size range of 5 to 5000 micron. Last one is nothing but a spray drying and spray congealing. It is for solid as well as liquid and particle size range is 600 micron. क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसके ऊपर, मैंने बोला है आपको ऑलरेडी, एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है. सो व्हाट इज द core size that can be micro encapsulated by using air suspension method? उसमें ऑप्शन में आएगा ये भी. So 35 to 5000 micron and sometimes more than that, and this method is known as a micro encapsulation as well as macro encapsulation. यहाँ पे देखो सॉलिड, ठीक है, सॉलिड देन सॉलिड और किसमें है, इसमें पैन कोटिंग में भी सॉलिड होता है. सो रिमेंबर दिस. ओके, सो पैन कोटिंग एंड माय एयर सस्पेंशन मेथड,
these methods are only applicable for a solid material to be encapsulated. अगर आपका solid material है, crystalline है, solid है, तो ही आप उसको air suspension method से या फिर pan coating से encapsulate कर सकते हो, otherwise नहीं. ठीक है. So remember, coadsorption phase separation method is for liquid as well as solid. Solvent evaporation multi-orifice centrifugal method is also for solid as well as liquid. Then solvent evaporation solid as well as liquid. Spray drying and spray congealing solid and liquid. तो पार्टिकल साइज याद रखो और कौन से मेथड में कौन सा कोर मटेरियल यूज करते हैं वो याद रखो. एयर सस्पेंशन मेथड मीन्स इट इज नथिंग बट द डेल ई रस्टर टेक्निक और इट इज नोन एज रस्टर टेक्निक. आई विल एक्सप्लेन इट लेटर. what are the uh, what is the desired properties of your coating material. जो आपको encapsulate करना है उसका भी एक desired characteristic होना चाहिए. So your drug should have desired characteristic, that is a core should have some few characteristic. Okay, but you cannot change the much about the core material. Okay, so core material का properties का इसलिए तो आप micro encapsulation कर रहे हो. So you can change there should be certain important properties of core coating material now. So what are the coating material used like? Coating material, there are different type of coating material which are used for the microencapsulation. First one is a water soluble resins. For example, gelatin, gum arabic, then starch, polyvinyl pyrrolidone, carboxymethyl cellulose, hydroxypropyl cellulose, hydroxyethyl cellulose, methyl cellulose, then arabinogalactan, polyvinyl alcohol, and polyacrylic acid. These are the different polymers which are used for microencapsulation. तो ये क्या है, पॉलीमर है, ये कोट फॉर्म करेंगे किसके ऊपर, आपके सॉलिड पार्टिकल जो है ड्रग का उसके ऊपर कोट फॉर्म करेंगे या फिर उसको एनकैप्सुलेट कर देंगे. ठीक है, तो उसको बंद कर देंगे आपके ड्रग को इसके अंदर. सो जेलेटिन, गम अरेबिका, स्टार्च, पॉलीविनाइल पाइरिडोन, कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, अराबिनोगैलेक्टन, polyvinyl alcohol and polyacrylic acid. These are the water soluble polymers. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, one of the following is not a water soluble polymer used for microencapsulation. वाटर सोल्यूबल ये है, अभी वाटर इनसोल्यूबल कौन सी. तो वाटर इनसोल्यूबल क्या है, वाटर इनसोल्यूबल इज इथाइल सेलुलोज, पॉलीइथिलीन, पॉलीमिथाइल एक्राइलेट, पॉलीअमाइड, ओके, पॉलीइथिलीन, poly polyethylene, that is ethylene vinyl acetate, cellulose, then nitrate and silicon. So these are the water insoluble resin. तो यहाँ पे याद रखो इथाइल सेलुलोज क्या है, वाटर इंसोल्यूबल है. इसके बारे में टैबलेट चैप्टर में भी बोला है मैंने. तो इथाइल सेलुलोज इज वाटर इंसोल्यूबल. पॉलीइथिलीन, पॉलीमिथाइल एक्राइलेट एंड polyamide, polyethylene, cellulose, nitrate and silicons. These are the water insoluble. वाटर सोल्यूबल कौन सा है, जिलेटिन है, आपका जो गम अरेबिका है, गम ट्राइकांडोक्रेक्स, स्टार्च, पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन, कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सीमेथाइल सेलुलोज, methyl cellulose, arabinogalactan. These are the water soluble. These are the water insoluble. Now next is nothing but the waxes and lipids. So waxes like paraffin wax, carnauba wax, spermaceti, beeswax, stearic acid and stearyl alcohol. So these are lipid in nature. These are the lipid in nature. Waxes and lipids. तो इसका क्लासिफिकेशन याद रखो किसमें कौन है. इथाइल सेलुलोज वाटर इनसोल्यूबल है, पॉलीइथिलीन, पॉलीमिथाइल, जहाँ पे पॉली आएगा ना, पॉली, तो पॉली मोस्टली वाटर इनसोल्यूबल होता है, जैसे पॉलीइथिलीन, पॉलीमिथाइल एक्रिलेट, पॉलीअमाइड, पॉलीइथिलीन. देन सेलुलोज नाइट्रेट एंड सेलुलोज सिलिकॉन्स, दीज आर द सेलुलोज नाइट्रेट एंड सिलिकॉन, दीज आर द वाटर इनसोल्यूबल. बाकी जिलेटिन जो है, गम जो है, स्टार्च जो है, पायरोलिडोन जो है, सीएमसी जो है, एचपीसी, हाइड्रोक्सीइथाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, अराबिनोगैलेक्टन, पॉलीविनाइल अल्कोहल, ये वाटर सोल्यूबल होता है. वैक्सेस कौन सा है, वाटर इनसोल्यूबल कौन सा है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है. एंटेरिक कोटिंग रेजिन्स. Enteric coating, okay, we have seen in the tablet, enteric coating tablet, they are coated with the enteric coating polymers like cellulose acetate phthalate, then your zein, then your shellac, etc. So same polymers are also used for the microencapsulation, enteric coating of microencapsulation. So shellac, cellulose acetate phthalate and zein, remember. Okay. Now first method is nothing but the air suspension method. So air suspension method of microencapsulation, it was given by Professor Dale E. Ruster, and it is also known as a
Rust technique. Okay, so by using air suspension method, as I have told you in the previous slide, only solid material can be encapsulated. यहाँ पे क्या है कि सिर्फ solid material जो है वो encapsulate हो सकता है, and it is used for both micro encapsulation as well as macro encapsulation. ठीक है, ये याद रखो. Another method is there known as a phase separation coaggregation method. It is the method given by this national register national cash register corporation. तो आप इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है कि one of the following method for micro encapsulation is given by national cash register NCR. तो आंसर वाज coaggregation phase separation. और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखो air suspension method is nothing but it is given by Dale E. Wurster or it is known as a Wurster technique. So these are the two methods. Now next slide is nothing but the first method is nothing but the phase separation coaggregation method. So we'll discuss it. Okay? Now this method involves three steps. ये phase separation coaggregation जो method है, phase separation coaggregation method. So phase separation coaggregation method involves three steps. So first step is nothing but the formation of three immiscible chemical phases. Okay. Second step is nothing but the deposition of coating material on the core, and third step is a rigidization of core, or rigidization means increase the core size or make them inert. Okay, inert coating. Okay, so we'll see one by one. First step is nothing but the formation of three immiscible chemical phases. Okay, so three immiscible chemical phases कौन सा होता है? First one is the liquid manufacturing vehicle phase, and core material, and then coating material phase. ठीक है, तो आपको माइक्रो एनकैप्सुलेशन करना है, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपका जिसका माइक्रो एनकैप्सुलेशन करना है वो ड्रग होना चाहिए, दैट इज अ कोर. ओके, दैट इज नोन एज कोर मटेरियल. ओके, दैट इज कोर मटेरियल बेस. ओके, और जिसके साथ में माइक्रो एनकैप्सुलेशन करना है वो क्या होना चाहिए? पॉलीमर. सो कोर मटेरियल, दैट इज कोर मटेरियल इज द मटेरियल टू बी माइक्रो एनकैप्सुलेटेड. Second one is a polymer. Polymer is the it is nothing but the polymer by which core material is micro encapsulated. Okay, then जो polymer के लिए dissolve करने के लिए solvent लेगा उसको बोलेंगे अपन liquid manufacturing vehicle. So the polymer the solvent in which polymer is soluble or it is dissolved, that liquid is known as the liquid manufacturing vehicle phase. यहाँ पे आपको तीन है, लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल फेज, कोर मटेरियल एंड कोटिंग मटेरियल. ठीक है, तो आपको ये इसका मिक्सचर बनाना है. सो यू हैव टू मिक्स दिस ऑल. ओके, सो यू फर्स्ट यू हैव टू डू, जो भी आपका पॉलीमर है, जैसे मान लीजिए कि आपको जिलेटिन का कोटिंग करना है. सो इफ यू वांट टू मेक अ माइक्रो एनकैप्सुलेशन बाय जिलेटिन, सो डिसॉल्व जिलेटिन इन द लिक्विड. ओके, लिक्विड जिलेटिन जो है उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो. आपका जो पार्टिकल है, पार्टिकल्स disperse that particles into the polymer solution. ठीक है, आपने क्या किया? पॉलीमर क्या है आपका? जिलेटिन है, उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और उसमें क्या किया? फिर ये सॉलिड पार्टिकल जो है आपके ड्रग के, उसको डिस्पर्स किए. सॉलिड पार्टिकल यू हैव टू डिस्पर्स इन द जिलेटिन सॉल्यूशन. ओके, दिस इज नोन एज सॉलिड पार्टिकल्स. ठीक है, ये सॉलिड पार्टिकल. और ये जो बाकी छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, सो दे आर नोन एज अ पॉलीमर इन सॉल्यूशन. स्टेज योर पॉलीमर इज सोल्यूबल इन द सॉल्वेंट. ये जो क्या है? सॉल्वेंट में है पॉलीमर आपका. यहाँ पे पॉलीमर सोल्यूबल है, इसमें सॉल्वेंट में. नाउ यू हैव टू मेक दिस सोल्यूबल पॉलीमर इनटू insoluble polymer. You have to make this polymer soluble into insoluble thin coating. Okay, how it can be done? It can be done by different process, by changing the temperature of this mixture, or by adding the salt which can precipitate this polymer, and again by using non solvent. इसमें आपको पॉलीमर सोल्यूबल नहीं है, वो सॉल्वेंट ऐड करो तो ऑटोमेटिकली प्रेसिपिटेट हो जाएगा. तो इनिशियली यू हैव टू make a solution of your polymer in the solvent, and you have to disperse your particles in that solution. Okay, now this step. Now what will happen? Core material is dispersed into solution of coating polymer. Solvent used for solvent used for making a solution of polymer is known as a liquid manufacturing vehicle. Okay, the coating material, that is a core, which is immiscible in the polymer liquid state. इमिसिबल होता है जब कोर मटेरियल जब ऐड करते हो फर्स्ट टाइम, वो कोर मटेरियल इमिसिबल होता है, बिकॉज योर कोर मटेरियल इज इमिसिबल इन द पॉलीमर सॉल्यूशन. ठीक है, नाउ यू हैव टू मेक
that soluble polymer into insoluble form. You have to change the phase of your polymer. आपका polymer में क्या है, polymer कहाँ है solution में, वो liquid state में. So you have to change the state of that by means of different methods. कि उसको temperature change करो, या फिर stirring rate change करो, stirring करो, या फिर उसमें कुछ salt add करो, या फिर उसमें कुछ non solvent add करो. So you have to change the phase of your polymers. Okay, so by using decreasing the temperature, okay, by stirring, or by addition of salt, or by changing the solvent, or by addition of non-solvent, so you can precipitate that polymer in a solution. Now whatever, okay, so the thin coat or thin film of polymer in solution is deposited on the core material by one of the following method of phase separation coagulation. कौन से मेथड है यहाँ पे, like change in the temperature of the polymer solution, or by adding the non-solvent, by addition of incompatible polymer to the polymer solution, or by inducing the polymer interaction, so that the polymer जो है आपका जो polymer है, that will form a coat on your core material. So you can see over here there is a formation of coat. ये coat हो चुका है इसके ऊपर. That is known as a coating. Okay, and now this is known as a primary coat. It is known as a primary coat. Now ऐसा कुछ 10 या 15 layers बन जाएंगे. So if such kind of 10 or 15 layers they are present on the particle, then it is known as a micro encapsule. You have to make rigid. So ये क्या होगा कि flexible होगा. जैसे यहाँ पे बन गया initially, तो ये flexible होगा. जैसे आपने check किया तो ये disperse भी हो सकता है फिर से. So you have to make that rigid. So you have to make that stable. Okay, in the third step. What is the second step? So deposition of coating on core solution. So in this step, liquid polymer coating is deposited on the core material by controlled physical mixing of coating material and core material in a manufacturing vehicle. Now coating polymer gets adsorbed on a particle. Okay, so coating solution जो है वो क्या होगा, particle और liquid के बीच में जो interface है, so whatever interface present between particle and your solid particle and liquid, so that polymer will be selectively get adsorbed. तो ये जो liquid है और ये जो solid है, this is solid and this is the liquid, so this polymer gets selectively adsorbed on the interface of liquid and solid and get deposited at the interface. It will get collected or will get accommodated at the interface. Okay, तो interface में जाके बैठेगा वो. So okay, so by so liquid polymer coating is deposited on the core material by controlled physical mixing of coating material and core material in the manufacturing vehicle, and polymer will get adsorbed on the particle and at the interface bound between core material and particle and the liquid. तो इसके बीच में जो इंटरफेस है उसके बीच में जाके पॉलीमर बैठ जाएगा because of the addition of non-solvent or because of the addition of salt, because of the changing the temperature. यहाँ पे आपने क्या किया कि फर्स्ट और एक बार बताओ. सो वट एवर कोटिंग मटेरियल इज देयर, जैसे मान लीजिए कि आपने जेलेटिन ले लिया है, फिर सेलुलोज ले लिया, तो जेलेटिन का या फिर सेलुलोज का सॉल्यूशन बनाओ पहले उसमें जिसमें भी वो डिसॉल्व होता है वो सॉल्वेंट. दैट सॉल्वेंट इज नोन एज अ लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग बेस. ओके, लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल बेस. एंड वो सॉल्वेंट में आपका पॉलीमर रहेगा. ओके, देन यू हैव टू डिस्पर्स दिस कोर मटेरियल इन द दैट सॉल्यूशन ऑफ पॉलीमर का जो सॉल्यूशन बना है उसमें सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स करो. नाउ अभी क्या करना है कि अभी आपका जो पॉलीमर है वो कहाँ पे है, सॉल्यूशन में है. ठीक है, सॉल्यूशन में पॉलीमर है, is in a liquid state. Now you have to change the state of that polymer. How you can change? You can change the state of that polymer in a solution by increasing the temperature or decreasing the temperature. Okay, or by addition of salt, by addition of non-solvent, or by addition of incompatible polymer. Okay, जैसे मान लीजिए कि जेलेटिन है. जेलेटिन क्या होता है कि जेलेटिन इन अ सॉल्यूशन below the its isolated pH. जैसे जेलेटिन का सॉल्यूशन बनाया, अगर pH 6 के नीचे है तो that will act as a negative, that will have negative charge. Okay, so gelatin solution less than pH 6 will have negative charge, and if you add another polymer which is having positive charge, suppose you are adding acacia,
So acacia will have positive charge. Okay, so addition of positively charged acacia to the negatively charged gelatin solution, what will happen? Gelatin will be precipitated. Okay, so that is nothing but the phase separation coadsorption. Okay, so you can change the state of the polymer by using either temperature, by decreasing the temperature, by addition of solvent, by addition of salt, okay, by addition of incompatible polymer, or by addition of non-solvent. Now whatever precipitate are there, so that gets selectively adds up on the interface of your solid and liquid. Okay, solid जो particle है और liquid interface है, उसके बीच में ये selectively adds up होगा and that will form a monolayer, will form a layer. Okay, जैसे यहाँ पे लिखा है layer बन गया, यहाँ पे पॉलीमर का लेयर बन गया. So that is nothing but the your core material is capsulated by polymer. Okay, this is the primary capsule. Now you have to make a rigid capsule. So this is a flexible. यहाँ पे detach भी हो सकता है, तो उसको rigid करना है. How you can make rigid? So rigidization of your coating. Rigidization of coating by using thermal or cross-linking or desolvation technique. Make a self-sustaining microcapsule. So this is how phase separation coadsorption method is there. Okay. Now examples of my encapsulated material by phase separation coadsorption method. So examples of core material which is encapsulated by this phase separation coadsorption method. Okay, और different method. So coadsorption phase separation method, तो उसमें भी different मेथड होता है. मैंने बोला टेम्परेचर चेंज, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ योर सॉल्ट, चेंज इन द सॉल्वेंट नॉन सॉल्वेंट, और पॉलीमर, एडिशन ऑफ इनकम्पेटिबल पॉलीमर. ओके, फर्स्ट इज द चेंज इन द टेम्परेचर. ओके, सो योर ड्रग लाइक पैरास्टामोल, पैरास्टामोल जो ड्रग है आपका, दैट इज अ कोर मटेरियल. पैरास्टामोल इज अ कोर मटेरियल, पैरास्टामोल पाउडर. ओके, it is encapsulated, okay, by using this ethyl cellulose. First what you have to, you have to dissolve this ethyl cellulose in the this solvent known as cyclohexane. You have to dissolve ethyl cellulose in the cyclohexane, and then you have to deposit or disperse this paracetamol powder in the solution. Okay, now what you have to do, you have to change the temperature. Okay, initially for mixing you have to mix at a higher temperature. Okay, for example say 60 degrees Celsius. Okay, 60 or 40 degrees Celsius, cyclohexane है तो 40 degrees Celsius. So initially you have to mix that at a higher temperature, and then you have to decrease the temperature slowly up to room temperature. So what will happen, this cyclohexane जो है, cyclohexane क्या है आपका, it is a volatile in nature. ठीक है, ये volatile है, तो ये निकल जाएगा, volatile है तो उड़ जाएगा. बाकी क्या रह जाएगा, पैरास्टामोल, उसके ऊपर किसका डिपॉजिट रह जाएगा, ethyl cellulose का. So you will get a microencapsule of paracetamol with the ethyl cellulose. Okay. Second method, addition of incompatible polymer. So यहाँ पे देखो methylene blue, it is a methylene blue. Methylene blue is a dye. It is used for various diagnostic agent, various diagnostic purpose. So it is also used as a laxative. Okay. Methylene blue is microencapsulated with an ethyl cellulose. Now what you have to do, you have to make a solution of ethyl cellulose in a toluene. दोनों का solution बनाओ, methyl cellulose क्या करो, disperse करो. So you have to disperse the methylene blue in the solution of toluene and ethyl cellulose, and you have to add incompatible polymer. ethyl cellulose का incompatible polymer जो है, मतलब दूसरा कुछ polymer है जैसे सोडियम, दूसरा कुछ सेलुलोज में मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज वाला पॉलीमर ऐड करो, तो उसमें क्या होगा, ethyl cellulose will be precipitated, will be formed a coat over methylene blue. So you will get a microencapsules of methylene blue. Methyl scopolamine hydrobromide will be methyl scopolamine hydrobromide is a drug used in the motion sickness. Scopolamine, ठीक है, तो atropine का ये डेरिवेटिव होता है. So it is encapsulated by using cellulose acetate butyrate. Cellulose acetate butyrate ये polymer है. Now this polymer you have to dissolve in the methyl ethyl ketone. Solution, इनका solution बनाओ, उसके बाद में इसको उसमें डिस्पर्स करो, मिथाइल स्कोपोलामाइन को डिस्पर्स करो. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड नॉन सॉल्वेंट. सो नॉन सॉल्वेंट एडिशन. ओके, सो नॉर्मली मेन सॉल्वेंट कौन सा है आपका, मिथाइल इथाइल कीटोन. इस सॉल्वेंट में सेलुलोज क्या है, सोल्यूबल है, मतलब सॉल्यूशन बनता है, इसमें ये डिपॉजिट होता है. मिथाइल स्कोपोलामाइन इसमें सिर्फ सस्पेंशन बनेगा उसका. ठीक है, तो मिथाइल स्कोपोलामाइन का ये जो सॉल्यूशन बना है आपका सेलुलोज प्लस मिथाइल इथाइल कीटोन, इसमें मिथाइल स्कोपोलामाइन डाल दो, आप सस्पेंशन बनाओ उसका, सर्कल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करो इवनली,
and then you have to add this isopropyl ether solution. So what will happen? Isopropyl ether will cause precipitation of this cellulose acetate butyrate, which will be selectively adsorbed on the interface of methyl scopolamine hydrochloride, and it will form a coat. That is a microencapsulation. Another method is that, so for example you can see oil soluble vitamins. Oil soluble vitamins जैसे आपका बोला है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. So lipid soluble vitamins जितने भी तो विटामिन ए, डी, ई, के, okay, so they are encapsulated using gelatin. Okay. What you have to do? You have to take a pig skin gelatin. डुक्कर जो होता है उसका स्किन का जिलेटिन लेना है आपको. You have to dissolve in a water at a temperature. So you have to make the solution of gelatin in water. Then you have to disperse this oil globules of vitamin in that solution, and you have to add salt later on. So addition of salt, what will cause? Addition of salt like sodium sulfate, okay, sodium sulfate solution to this mixture will cause precipitation of this gelatin, which will form a coat on this droplets of vitamin. Okay, that is a solid image. Again, so methyl salicylate, salicylic acid का derivative है methyl salicylate. So methyl salicylate can be encapsulated by using gelatin and Arabic gum complex. So it is an example of polymer polymer interaction. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. So methyl salicylate जो है methyl salicylate, पहले क्या करना है आपको? पहले लेना है आपको gelatin. So gelatin, ठीक है, gelatin जो है आपको पहले लेना है gelatin. Gelatin का solution बनाना है water में. So gelatin you have to make a solution of gelatin in water. Okay, then disperse this methyl salicylate in the gelatin solution, and then add gum acacia or gum arabica. Same. So polymer polymer interaction. So negative positive charge gelatin and negatively charged acacia solution. बोला है अगर pH 6 है उसके नीचे अगर gelatin का solution है that will become a positive image. ठीक है, तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको. जैसे ही आप दूसरा नेगेटिवली चार्ज्ड पॉलीमर डालते हो तो उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है. सो इफ यू ऐड दिस अकेशिया गम, so it will precipitate and it will form a coat over methyl salicylate. That is again method. So these are the examples of drug which are being coated by using phase separation coagulant phase separation method, by using different techniques of separation coagulant method. Paracetamol, methylene blue, methyl bromide, hydrochloride, vitamins, okay, oil methyl salicylate. तो हर एक का एक एग्जांपल लिया है. टेम्परेचर चेंज से कैसे करना है, okay? इसके ऊपर आप पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हो. ठीक है, इनकॉम्पेटिबल पॉलीमर कैसे ऐड करके, नॉन सॉल्वेंट एडिशन ऑफ सॉल्ट, polymers polymer interaction. Okay. It was a totally coagulant phase separation method only. Now we'll see the next method. Next method is a microorifice centrifugal process. Microorifice centrifugal process. तो यहाँ पे सबसे पहले एक ही चीज याद रखो. Microorifice centrifugal process is nothing but the mechanical process. It is known as a mechanical process of microencapsulation. यहाँ पे लिखा नहीं कहाँ पे मुझे मालूम है, लेकिन it is known as a mechanical process of microencapsulation. याद रखो. So this method was developed by this Southwest Research Institute. So in this centrifugal force is used or it is utilized this method to hurl the core material. To hurl मतलब to throw the core material. जो भी आपका core material है particles, वो उसको forcefully centrifugal force की वजह से वो push कर देते, throw कर देते. इसमें a enveloping layer of polymer का layer में उसको जोर से थ्रो करते हैं और वो माइक्रो एनकैप्सुलेशन बन जाता है. Microorifice centrifugal process, it was developed by Southwest Research Institute. This centrifugal force is utilized to hurl the core material particle through a enveloping microencapsulation membrane. तो जो पॉलीमर का मेम्ब्रेन है उसके थ्रू उसको फोर्सफुली से उसको फोर्स से भेज देते हैं ताकि वो मेम्ब्रेन को कट कर दे और वहाँ पे कैप्सूल बन जाए. It is a mechanical method of microencapsulation. यहाँ पे लिखो mechanical method of microencapsulation. याद रखो. तो first one is a air suspension, second one is a your phase separation coagulation method, third one is a microorifice method. We'll see the fourth one. Fourth one is known as a pan coating or simply coating. So the method is exactly similar to your tablet coating. जो आप tablet coating का pan होता है
उसमें ही कर सकते हो। ओके, सो पैन कोटिंग मीन्स द कोर पार्टिकल ग्रेटर देन 600 माइक्रोन। तो कोर पार्टिकल का साइज क्या है, 600 माइक्रोन एंड मोर, दोज आर ओनली here those particles are only encapsulated. Okay, coating solution is sprayed on the core material. So coating solution बना है आपको उसका सॉल्वेंट में और वो उसको स्प्रे करना है। ये पहले तो आपका कोर मटेरियल जो है वो कोटिंग पैन में डालना है आपको। यू हैव टू कीप द मटेरियल इन कोटिंग पैन, यू हैव टू स्टार्ट द कोटिंग पैन, स्टार्ट कोटिंग इट, you have to maintain a temperature condition. Okay, and there should be provisions of dry air in production, like your exactly like your tablet coating. तो सिर्फ टैबलेट कोटिंग में क्या होता है कि टैबलेट डालते हो उसके ऊपर स्प्रे करते हो सॉल्यूशन। यहाँ पे टैबलेट की बजाय क्या करना है आपको, यहाँ पे कोर मटेरियल डालना है, जो मटेरियल का कोटिंग करना है कोर मटेरियल। So core particles greater than 600 micron are generally coated by this method. Coating solution is sprayed on the solid core material and get to get a desired size micro encapsulation in the coating pan. Remember this coating pan method and air suspension method. These are the two methods which which are used to encapsulate solids only. पैन कोटिंग और एयर सस्पेंशन मेथड में सिर्फ सॉलिड का ही माइक्रो एनकैप्सुलेशन करते हैं। बाकी जो मेथड है जैसे आपको फेज सेपरेशन कोएजुलेशन मेथड, माइक्रो ओरिफिस मेथड, पॉलीमराइजेशन मेथड, ओके, सो स्प्रे ड्राइंग, स्प्रे कंजेलिंग, उसमें लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों होता है, याद रखो। नेक्स्ट मेथड इज स्प्रे ड्राइंग एंड स्प्रे कंजेलिंग। ये एकदम शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट वन इज स्प्रे ड्राइंग एंड स्प्रे कंजेलिंग। सो दीज टू मेथड्स आर सिमिलर but okay, so initial step is similar but the later the okay, so these two methods are similar. The core material is dispersed in the liquid of in the solution of coating solution or coating solution. Core material is dispersed in the liquid containing substance. Okay, तो core material क्या करना है आपको, उसको डिस्पर्स करना है लिक्विड में, ओके, पॉलीमर के सॉल्यूशन में, ओके, डिस्पर्स करना है और वो सॉल्यूशन बाद में स्प्रे करना है आपको। You might have seen the spray dryer. In the drying process we have seen the spray dryer. Spray dryer में क्या होता है, वही होता है, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन बनता है ड्रग प्लस सॉल्यूशन वो स्प्रे करते हैं, अंदर जो ये होता है उसमें ड्राई एयर होता है। जैसे स्प्रे करता है मिस्ट तो उसमें ड्राइंग की वजह से क्या होता है, इवापोरेशन होता है वाटर का और मटेरियल ड्राई बन जाता है। सेम टेक्निक इज यूज फॉर द माइक्रो एनकैप्सुलेशन, spray drying. So in this core material along with the coating solution, so materially you have to disperse in the coating solution and you have to spray that coating solution. You have to spray that final mixture in a dry air, okay, so that there will be evaporation of solvent and the polymer will be deposited on the particle, okay, forming a capsule. Core material is dispersed in the liquid coating substance and spraying or introducing the material mixture into the same environment condition, thereby relatively rapid solidification will take place. Coating will be affected. Okay. But there is a little difference between spray drying and spray congealing. It was about the spray drying. Now, in case of spray congealing, there is a little bit difference. Congealing मतलब क्या? Congealing मतलब solidification. Spray congealing मतलब क्या? Spray करके solidify होना. Okay. The basic difference in the both spray drying and spray congealing method, that is a formation of coating at later stage. So in case of spray drying it is done by evaporation, okay, it is done by rapid evaporation of solvent in case of spray drying, and in case of spray congealing it is done by thermal congealing of molten coating material or solidifying the dissolved coating material and introducing the coating material into non-solvent in a spray congealing. Okay, so spray drying spray congealing में क्या है, इनिशियली सेम प्रोसेस है कि आपको क्या करना है कि कोर मटेरियल और कोटिंग सॉल्यूशन इसमें कोर मटेरियल में डिस्पर्स करना है, सब्सटेंस बनाना है उसका, और बस स्प्रे ड्राइंग में और स्प्रे कंजेलिंग में सेम थिंग है। बट क्या है कि स्प्रे ड्राइंग में क्या है कि आपको हॉट एयर यहाँ पे रहता है, स्प्रे कंजेलिंग में यहाँ पे अलग टेक्निक होता है। स्प्रे कंजेलिंग में मोल्टन मास जो है वो डिफाई होता है। स्प्रे कंजेलिंग इज अ डिफरेंट टेक्निक and drying is a different technique, little bit difference. So that is a spray drying and spray congealing technique. Next method for micro encapsulation is solvent evaporation. Solvent evaporation, इसमें क्या करना है आपको, हिंदी में बोलता हूँ आपको, solvent evaporation, evaporate को किसको करेंगे, solvent को करेंगे। ऐसा solvent होना चाहिए यहाँ पे, so volatile solvent होना चाहिए। So coating solution is dissolved in the volatile solvent
which is immiscible with the liquid manufacturing phase, ठीक है। तो कोटिंग सॉल्यूशन जो है आपका, तो पहले तो आपको पॉलीमर जो कोट करना है उसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। जो पॉलीमर जिस सॉल्वेंट में सोल्यूबल है उसमें डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाओ, और वो सॉल्यूशन बाद में एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालो और उसमें कोर मटेरियल डालो और उसको हीट अप्लाई करो। तो जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है वो उड़ जाएगा और जो मटेरियल पॉलीमर जो है उसको कोटिंग कर जाएगा। कोटिंग सॉल्यूशन इज डिसॉल्व इन द volatile solvent which is immiscible with the liquid manufacturing vehicle phase. Okay. The core material is then dissolved in a coating polymer solution with the control studying. Core material mix is dispersed in the liquid manufacturing phase to obtain a appropriate size of microcapsule. The mixture is heated to evaporate the solvent for polymer, and that's why it is known as solvent evaporation method. This was the sixth method. Now seventh method is nothing but the polymerization method. Okay, so actually it is a new method, and it is a very new method, not not a, still it is not established in the pharmaceutical industry. उसको अभी तक यूज नहीं किया है. So new technique for microcapsule formation. Method involves the reaction of monomeric units located at the interface existing between solid and liquid. Okay, and then polymerization of that polymer present at the interface. क्या है कि न्यू टेक्निक है माइक्रो एनकैप्सूल फॉर्मेशन का. तो इसमें क्या होता है कि so the whatever polymer of which coating is to be made, that polymer is available in the interface in a monomeric form. तो जैसे अब मैंने बोला कि आपको सॉल्वेंट में पॉलीमर का सॉल्यूशन बनाना है, बाद में उसमें डिस्पर्स करना है, तो वहाँ पे एक इंटरफेस बनेगा सॉलिड के बीच में और ये मिक्सचर लिक्विड मिक्सचर के बीच में. तो उस इंटरफेस में क्या होता है कि वो पॉलीमर जाके बैठता है. वो इनिशियली नॉर्मली वो मोनोमर्स होता है, बट यू हैव टू मेक देम ए पॉलीमर. ओके, बाय polymerization technique. There are different techniques for polymerization. Okay, that is beyond the scope of this lecture. To read, you can read more. Polymerization technique. It is mostly applicable for pharmaceuticals and medicals. ये क्या था? New technique and mostly applicable method for pharmaceuticals and medicals for microencapsulation. Now again you can see in a very short methods of microencapsulation. First one is the air suspension method. Air suspension method. Okay. So it was invented by Dale E. Brewster. यह इसके ऊपर याद रखो. Dale E. Brewster, invented by Dale E. Brewster. Okay. It involves the dispersing of solid particle material into supporting airstream, and after then spraying the coating suspended particle. तो इसमें क्या है कि एयर सस्पेंशन मेथड में क्या होता है कि आपको जो भी कोर मटेरियल है उसका पाउडर जो है उसको सस्पेंड करना है इसमें एयर में by blowing the air from below. Okay? So that particle will be suspended in the air, and by another means you have to spray the coating solution on that. There will be a fine coating of the polymer on coat. Raster flow is involved in this method, and it is applicable for both micro as well as macro encapsulation. I will show in the phase separation coagulant method we have seen in the detail. Okay, so 3 step होता है. First step is the formation of 3 immiscible phases, then second deposition of coating material on the core, and third one is rigidization of माइक्रो ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल मेथड. उसके बारे में डिटेल में देखा है आपने. इन्वेंटेड बाय साउथ ईस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट SWRI SRI. Mechanical method was the which utilizes the centrifugal force to hurl the core material through enveloping microencapsulation membrane, thereby making a microencapsulation. It is a mechanical method. Next one is the pan coating. We have seen microencapsulation of a relatively large particle, that is 600 microns, is used for the preparation of control release bed, मतलब control release powder. स्प्रे ड्राइंग, स्प्रे कंजेलिंग, इसके बारे में देखा है. सॉल्वेंट इवेपोरेशन के बारे में देखा है. पॉलीमराइजेशन के बारे में भी देखा है. You can see over here it is known as a Ruster technique. It is known as a Ruster technique और air suspension coating. ठीक है, एयर सस्पेंशन कोटिंग का ये एस्टिमेट होता है. सो यहाँ पे ये परफोरेटेड स्क्रीन होता है. परफोरेटेड स्क्रीन मतलब यहाँ पे उसको एक
सी होता है, सी को छेद होते हैं, ये उसके ऊपर आपको पाउडर रखना है। कोर मटेरियल और पाउडर टू बी कोटेड, ओके, एंड फ्रॉम बिलो विच देयर इज अ एयर स्ट्रीम, इसके नीचे से एयर पास होगा, तो जब एयर आएगा तो ये पाउडर को लेके जाएगा एंड इट विल सस्पेंड इन द एयर, it will, powder should be suspended in the air, okay, so that is known as air suspension. Now have another provisions over here, that is a nozzle will spray the coating solution on this suspended particle. This in this chamber there is arrangement of drying element, also there is arrangement of dry it or humid hot air, so that this flow is known as the Brewster technique, okay. each cycle, तो हर एक साइकिल में क्या होगा कि एयर नीचे से आएगा पार्टिकल सस्पेंड हो गए, जैसे सस्पेंड हो गए यहाँ से स्प्रे आएगा, एक आपका स्प्रे आएगा कोटिंग सॉल्यूशन का, यहाँ पे उसके ऊपर मिलेगा, इट विल फॉर्म a layer on coating, it will form a layer on particle will settle down, okay. Again in the second cycle, again air will pass, again particle will be suspended, again spraying will be there, again there will be development of one coat. So such kind of 8 to 10 coats, 8 to 10 cycle you have to undergo to make a complete coating, that is air suspension, okay. There I have told you there involves a three type of flow, okay. So this one is known as top top spray, okay. First one is known as top spray, यहाँ पे यहाँ से स्प्रे हो रहा है, this one is a top spray, this one is a this one is known as a bottom spray, this one is known as bottom spray, यहाँ पे स्प्रे हो रहा है, this one is known as a bottom spray, okay. It is known as a roster technique, ये bottom वाला जो है it is known as a roster technique, and this one is known as a tangential spray, this one is known as a tangential spray, यहाँ पे यहाँ से स्प्रे हो रहा है, तो इसका भी ग्लैट एयर टेक्निक, इसको बोलते हैं ग्लैट एयर टेक्निक. So top spray, bottom spray and tangential spray. So when we were discussing about the tablet at that time also I have told you spray, this bottom spray is known as a roster technique, and this tangential spray, तो spraying solution यहाँ से है. So bottom spray is known as a roster technique, daily roster is related to this question, इसके ऊपर कम से कम 3-4 बार आ चुका है. And then tangential spray is known as a GLAT air technique, GLAT AIR technique, GLAT air technique, okay. So this was regarding the